guys, welcome back to my channel काजल्स ऑल इन वन ब्लॉग। सो टुडे हम लोग आज सिक्किम के बारे में जानेंगे। वेयर इज सिक्किम एंड हाउ इज सिक्किम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू नो मोर अबाउट सिक्किम। Here you can see Sikkim is a state in northeastern India. It shares borders with Tibet in the north and northeast, Bhutan in the east, Nepal in the west, and West Bengal in the south. Sikkim is also close to India's Siliguri corridor near Bangladesh. So आपने यहाँ पे देखा कि सिक्किम किस तरह से अपना बॉर्डर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट के साथ शेयर करता है। So you can see the map of Sikkim, how Sikkim can share its borders with different country and our own state West Bengal. So everything is clear in this map. So the second point is Sikkim is the least populous and second smallest among the Indian states. A part of the eastern Himalaya, Sikkim is notable for its biodiversity, including alpine and subtropical climates, as well as being a host to Kanchenjunga, the highest peak in the India, and third highest on earth. Sikkim's capital and largest city is Gangtok. Almost 35% of the state is covered by the Kanchenjunga. So here हमने ये जाना कि सिक्किम जो है 35% जो है इसका एरिया है वो कंचनजंगा से कवर होता है, जो कि इस वर्ल्ड का थर्ड पीक है, हाईएस्ट पीक है। और इसके बाद जो इसका कैपिटल जो है वो गैंगटॉक है, जो लार्जेस्ट सिटी भी है। So here you can see the map of India where Sikkim is। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहाँ पे पड़ता है आप देख सकते हैं, रेड इन कलर, दैट इज सिक्किम। So Sikkim has 4 districts. Let's see what are they. At north we have Mangan, then south Namchi, and east Gangtok, and west is Gezing. So these all are the 4 districts of Sikkim, north, south, east and west, which are Mangan, Namchi, Gangtok and Gezing. Now let's discuss about government. So the governor of Sikkim is Honorable Ganga Prasad. He is a present governor of Sikkim, and the chief minister of Sikkim is Honorable Prem Singh Tamang. He is also known as PS Gole in Sikkim. He is from SKM party. So let's discuss about Ambol and Anthem. So the Ambol of the state is Kham Sung Wangdu, which means conqueror of the 3 worlds, and anthem is Jahan Baksha Tista Rangit, which means where Tista and Rangit flow. So the state mammal, or we can say that the state animal of Sikkim is red panda, where we can find lots of red panda. Second, state bird, which is known as blood pheasant. Blood pheasant we also can find there, so it is state bird. So the next is state flower. So the state flower is Nobel Dendrobium. It is the state flower of the Sikkim. So now the next we have a tree. So since guys you have to notice here कि tree और फ्लावर ये दोनों अलग अलग है, जिसमें से आपको ये ट्री और ये जो फ्लावर नेम है ये 2 अलग अलग इन लोग का स्टेट बर्ड और स्टेट ट्री है, जिसे रोडोडेंड्रॉन निवियम भी कहते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेजेस। सो व्हाट आर द लैंग्वेजेस ऑफ सिक्किम। सो द फर्स्ट वन इज नेपाली, सेकेंड वन इज भूटिया एंड थर्ड वन इज लेप्चा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। So guys, please listen here. Now we know that the official languages of the state are Nepali, Lepcha and Bhutia, in which Nepali language is recognized by Indian government, but there
There are many additional official languages including Gurung, Limbu, Mangar, Mukhya, Newari, Rai, Sherpa and Tamang. For the purpose of preservation of culture and tradition in the state, and also English is taught in the schools and used in government documents. ये तो था वहाँ का जो लैंग्वेजेस है, जो सिक्किमिस लोग अपना लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि वहाँ का रिलीजन क्या है, कौन कौन सा है। सो द प्रीडोमिनेंट रिलीजन्स आर हिंदुइज्म एंड वज्रायजना बुद्धिज्म। दे आर द टू रिलीजन ऑफ सिक्किम। Now it is time to know about Sikkim economy. So Sikkim's economy is largely dependent on agriculture and tourism. Sikkim accounts for the largest share of cardamom प्रोडक्शन इन इंडिया। सो यहाँ से हमने ये जाना कि सिक्किम का इकोनॉमी जो है वो टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और प्लस इसके बाद यहाँ का जो है टूरिज़्म जो है वो मोस्ट नंबर 1 इकोनॉमिक का सोर्स है, जहाँ से इकोनॉमिक हो सकता है टूरिज़्म। और यहाँ से हमने ये भी जाना कि सिक्किम में ये जो बिग कार्डनम, जो बड़ी इलायची का खेती एकदम लार्जेस्ट अमाउंट में होता है, और ये जो कार्डनम का खेती करके ये लोग डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट रीजन्स में भी सप्लाई करते हैं, जिससे भी इनकम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। So next, the places to visit in Sikkim. So number 1, Guru Donmak Lake. It is in Sikkim and it is very beautiful place. And the second, Rumtik Monastery. It is a monastery. It is the holy place of Buddhism. And the third one is Kanchenjunga. It is a fantastic view. Now the fourth one is Timi Tea Garden, where tea has cultivated and grown up. And the fourth one is Buddha Park, which is located in Rabangla and the Rumtek Monastery. If you like my video, then like it, share it and comment it.